Good morning, students. Today we will discuss the last segment of the chapter, that is revolution and everyday life. Now we have learned, we have discussed, we have studied the whole chapter of French Revolution, in which we saw the causes behind the French Revolution and the change took in the society, and change happened in the society by the revolution. Now it is the last situation after the French Revolution. We come to the end, and generally some questions are before us. So we have to be ready ourselves that how we will get the answer of them, and just because it is on the only on the one sided class, that is I can only read and you can only listen, but sometimes try to think, like, if really it happens or it happens any revolution in society, so what is the result consequences of that revolution, really gives the, you can say, influence of the situation what had happened. So can politics change the clothes people wear? Means, this is the question, means can politics change the clothes people wear? क्या पॉलिटिक्स, राजनीति ऐसी चीज है जो कि किसी का पहनावा बदल सकती है? द लैंग्वेज दे स्पीक, क्या उनकी भाषाओं को चेंज कर सकती है? द बुक दे रीड, क्या उनकी जीवन में पढ़ने वाली किताबों को बदल सकती है? The years following 1789 in France saw many such changes. ऐसे ही कुछ चेंज जो थे वो फ्रांस में देखे in the lives of men and women and children, which brought some changes. And the revolutionary governments took it up to themselves to pass law that would translate the ideals of liberty, equality into everyday practice. वहाँ पर क्या होता है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, इट टुक अपॉन देमसेल्फ पास लॉ, जिसने खुद कानून बनाए, नियम बनाए, वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स, और चेंज कर दिया आइडियल्स, जो आदर्श बने, किसके, कौन से वाले आदर्श, बट पर्टिकुलरली द राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस, रोज की जिंदगी में ये चीज़ें रोल प्ले करने लगी. One important law came to into effect soon after the storming of the Bastille in summer 1789 was the abolition of censorship. सबसे पहला काम क्या हुआ, सेंसरशिप खत्म हुई. सेंसरशिप का मतलब होता है the control over some areas, basically press और expression, जर्नलिज्म, इन सब पर तो कंट्रोल किया जाता है, मीडिया को कंट्रोल करना, वो खत्म कर दिया गया, सेंसरशिप. And the old regime were written material and cultural activities. जो old regime में थी, all written material, जो पहला कुछ भी लिखा दस्तावेज थे, cultural activities के, books के, newspapers के, plays के, could be published or performed only after they have been approved बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग. अब से पहले क्या होता था, जो भी लिखा जाता था उसको किंग अप्रूव करता था, एंड आफ्टर दैट इट केम टू इनटू द नॉलेज ऑफ द पीपल. बट नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अभी क्या हो गया, राइट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट से क्या हुआ, हर इंसान के पास क्या आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई, अपना सबके पास बोलने का अधिकार था, एक्सप्रेस करने का राइट था, और नेचुरल राइट थे. ऑल वी राइट्स वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट सेगमेंट. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside. अब क्या था, न्यूज़पेपर, it was not only in the reach of cities people but in urban areas. न्यूज़पेपर वहाँ भी पहुँचते थे, पैम्पलेट्स पहुँचते थे, बुक्स पहुँचती थी, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड, मतलब पूरे बाजारों में ये सब भरा मिल रहा था, क्या, प्रिंट कल्चर. France, from there where they traveled rapidly into countryside, they all described and discussed the events and changes taking place in France. अभी कोई कंट्रोल नहीं था, कोई मतलब लोग चुप नहीं थे, हर चीज डिस्कस होती थी, एवरीथिंग दे वर डिस्कसिंग. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्ड अपोजिंग द व्यूज ऑफ इवन कुड बी एक्सप्रेस. अब हर चीज डिस्कस की जाती थी. ईच साइड sought to the convenience and the other or its position through the medium of print
plays, songs, festives, process, and attracted the large number of people. Means there was no any control of any kind of activity, drama, song, poetry, everything was written. People were free to write in their own views and towards they expressing their ideas through this system. So this was only they could grasp the identity of ideas such as liberty or justice, and political philosopher wrote about a length of texts. मतलब people were writing lots of things, especially the philosophers. Only handful of educated people could read. जब ये इतना enthusiasm, इतना क्रेज तब था लोगों में, जबकि कुछ ही लोग पढ़े हुए थे. मतलब इलिटरेसी वहां पर भी थी, इलिटरेट लोग वहां पर भी थे, लेकिन फिर भी क्या शो कर रहे थे? दे वर enjoying all the things of society. So after that, we come to the conclusion. Conclusion says of the chapter, like 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. The segment which we left in between, when you can say Robespierre was died and killed, and after that Napoleon Bonaparte got the right to become the dictator of the country. So he set out. अब यहाँ पर थोड़ा नेपोलियन का डिस्कशन है. उसने क्या किया? He set out some rules and regulations like conquer neighboring European countries, disposing the dynasty and creating kingdoms where he placed member of his family. Means is to say, जब उसने फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया तो साइमल्टेनियसली जो आसपास की कंट्री थे, he victoried them, got of victory over them, and he made the king of his family only. Means he appointed the people of his family. नेपोलियन saw his role as a modernizer. यहाँ पर नेपोलियन का जो रोल बन जाता है वो मॉडर्नाइजर का बन जाता है. उसने मॉडर्नाइज किया यूरोप को. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मतलब उसने किसी की भी प्रॉपर्टी को कोई जब्त करने की कोशिश नहीं की. लोग इससे ज़्यादा खुश हुए कि कोई भी राजा बनता है तो वो नए नियम निकालता है, प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा डिसीजन लिए जाते हैं, बट इट वॉज नॉट देयर. he given the protection to the private property and uniform the system of weight and measures provided by the decimal systems. Initially many of Napoleon as well the liberator who would bring freedom to the people. शुरुआत में क्या हुआ? उसने बहुत चीज़ें ठीक करी, लाइक मार्केट में जो वे और मेजरिंग सिस्टम था, इट वाज इक्वल, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. एंड इनिशियली मैनी नेपोलियन, जो लोग जो थे शुरुआत में नेपोलियन को लिबरेटर कहने लगे. लिबरेटर का मतलब होता है लिबरल, यानी कि उदारवादी. So he was a good person, good king or good dictator, like one who was ruling over the country, and freedom of the people he took care. But soon as Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force, लेकिन ज़्यादातर कहाँ हुआ? धीरे धीरे उसकी आर्मी सब जगह दिखाई देने लगी. इन्वेड करना मतलब he was annexing the kingdom or empire in Europe. Napoleonic he was finally defeated in Waterloo. और बाद में ऐसा ही हुआ. यहाँ स्टोरी में इतना नहीं है. ये कहा जाता है to see his power, the all you can say the neighboring countries went against of him, or the Waterloo battle took place, and many of his measures and carried revolutionary ideas, liberty and modern laws to other part of Europe, an impact of people longer after Napoleon had left. मतलब लोगों ने उसको पसंद तो किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी टाइम तक बना रहा. So the idea of the democratic rights were most important legacy of French Revolution. These spread of France, the rest of the Europe during 19th century. यही चीजें 19th century तक फैली, and there where the feudal system abolished. सामंतवाद खत्म हो गया, जमींदारी प्रथा जो थी, and colonized people were rework the idea of freedom and bondage into their movements to create the sovereign nation state. सॉरेन नेशन स्टेट एक सुपर पावर, सुप्रीम पावर नेशन स्टेट बनाने के लिए सब लोगों ने फॉर्ट किए. सो ये आइडिया जो था वो जेनरेट हुआ हर जगह, और ये इससे इंडिया भी अनटच नहीं था, बिकॉज टीपू सुल्तान एट दैट टाइम was and Raja Ram Mohan Rai was very much inspired from French Revolution,
and individually who responded the ideas coming to the revolutionary France. मतलब उन्होंने भी इस चीज से काफी इंस्पायर हुए. In reference of India, if we say, so this was the chapter of French Revolution. Today you read till the time, and after that the activities have been given, and after that these are the questions. So all the questions you will do of this chapter, and extra question I'll send in the next videos. Okay, thank you, have a nice day.